everyone, welcome to Sports Taaza. El Clasico of IPL just ended and it was a thriller. I won't say as expected because match was slightly on the boring side, but still a great finish to the मैं game. वैसे डिसएग्री करूंगा. मैच वाज नॉट बोरिंग एट ऑल. Majority मतलब most of the game I thought was really like dragging along. धीरे धीरे चल रहा था. Starting was very happening. Chennai inning was like a little boring, but fun game nonetheless. I'll begin with you, Farhad. What did you make out of the match overall? Are you happy, sad? What is your basic I analysis on it? so Yeah. I think there can be no better line than saying कि Dhoni finishes off in style, all over again. So that was, I think, the story of the day, perhaps. Like he still has it in him, the greatest finisher the game has ever seen, and he came to the party today. When it looked like it's slipping away, when the sixth wicket fell of Jadeja, it was like, oh my God, it's gone. And I was, by the way, supporting CSK today simply because Mumbai just doesn't have the goods this year. They might win one odd match, somewhere down the line, but otherwise in तिलों में तेल नहीं है तो नहीं है. आज though they did bowl well, अच्छी bowling की, they were little unlucky, they were tight in the field जो चेन्नई नहीं था. But I mean कहते ना कि I mean when the luck isn't on your side, then you don't cross the line. See, Farhad, आपने bowling की बात करी, but I want to kind of talk about it. कि what is not going as per Mumbai's plan? You're saying bowling नहीं चल रही, but I think batting भी नहीं चल रही क्योंकि आप मुंबई में इन these small relatively small grounds 150 का टारगेट मैं पार स्कोर किसी भी एंगल से नहीं मानता, नो मैटर हाउ स्लो द पिचेस, क्योंकि ड्यू आती है एंड देन सेकंड इनिंग like, and just the fact that 32 matches, 32 tosses and every winning captain has opted to bowl first. तो सिंगल हैंडेडली बोलना कि bowling भी है नहीं चल रही, I don't think I'd agree. Batting has also been very poor, is what I Batting think it तो है ही, बैटिंग तो है ही poor. It is like top order तो बिल्कुल ही मतलब रोहित and ईशान both are woefully out of touch. But somewhere I think the batting has got to do with the bowling, I feel, because somewhere I feel कि उनको भी थोड़ा सा इल्म है कि bowling नहीं चल रही है उनकी, मतलब bowling में वो है ही नहीं. They don't have the goods this year. Except अगर बुमराह को अगर हटा दे तो they don't have the goods. So then they are, I think, while playing also, I don't think they're playing freely जैसे normally मुंबई इंडियंस की आदत रही है over the years. I feel वो impact batting पे भी आ चुका है, and especially it doesn't help. I agree with you as well. It doesn't help when the top order doesn't fire. It puts far too much pressure on the middle order. और मतलब ये बहुत एविडेंट है, बैटिंग लाइनअप थिम्बल है फॉर श्योर, क्योंकि ये बहुत एविडेंट है द वे इवन ईशान किशन हैज बीन बैटिंग. वो पता नहीं क्या ही रोल खेलना चाह रहे हैं. एंड रोहित लास्ट 3-4 मैचेस within first 5 balls that he plays gives away his wicket, and then Ishan is also on the back foot trying to do something, get runs, which is not his natural game. तो थोड़ा ऑफ लगे हैं. Let's talk about a bit of positives from today, and I'll possibly give this to Vidit. How impressed were you with the youngsters and people who were brought in into the side? They had 3 changes today. Daniel Sams was brought back in, Ritik Shawkeen, debutant, and Riley Merritt, debutant for Mumbai Indians. सो शुभम, मतलब चेंजेस वैसे काम किए, पर मैं वैसे चेंजेस से खुश नहीं था. मैं अभी भी टिम डेविड चाहता हूँ स्क्वाड में. ऑल्दो जो तीनों चेंजेस किए, तीनों ने अच्छा काम किया. आज डैनियल सैम्स, मतलब वेरी सरप्राइज दैट ही वाज गॉट बैक, पर आज 4 विकेट ले गए 30 रन में, मतलब बहुत सरप्राइजिंग है. और जब आपके पास सैम्स भी हैं और नाटकट भी हैं, आप उनमें से किसी एक की 4 ओवर 15 ओवर से पहले ख़त्म कर सकते हैं. किसी को तो लास्ट 5 ओवर में, लास्ट 3 ओवर में डालना, अगर मतलब वैसे उनाटकट का खत्म हो रहा था तो हिज फिगर्स वर बेटर. आज सैम्स का खत्म हो गया तो हिज फिगर्स वर बेटर एंड उनाटकट वेंट फॉर रन्स. और लास्ट ओवर 17 रन चाहिए, उनाटकट डिफेंड कर रहे हैं, तो मुझे पता था कि अगर वहाँ पे ब्रावो प्रेटोरियस भी होते, धोनी नहीं भी होते, तो भी चेन्नई स्टार्ट्स ऑन अ हायर साइड, बिकॉज उनाटकट इज नॉट गुड इन द स्लॉग ओवर्स. मतलब वो सबको पता है ही कैन नॉट डिफेंड.
पर यही दिक्कत है कि आपके सैम्स भी है, सैम्स भी नहीं कर सकते, अब उनमें से किसी के ओवर जल्दी खत्म करने हैं, तो मुंबई चोज सैम्स एंड ही वाज बॉलिंग वेल। सो ऋतिक शौकीन, पर आई थिंक मुझे लगा मार्कंडे को लाएंगे, पर वो ऋतिक शौकीन को लाए, वेरी सरप्राइज। वैसे तो मुरुगन अश्विन भी ठीक ही कर रहे थे, तो आई एम पर्सनली नॉट टू हैप्पी, बिकॉज अगर आज ऋतिक शौकीन पिट जाते, बिकॉज ही इज अ रेगुलर फिंगर ऑफ स्पिनर, मतलब उनके ज्यादा वेरिएशंस नहीं दिखे, ही डिड बोल वेल, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे लगा दैट वाज मेनली बिकॉज चेन्नई में बहुत लेफ्ट हैंडर्स हैं, पर उन्होंने आज मोइन को ड्रॉप कर दिया, सैंडनर को ऊपर भेजा, तो थोड़ी दिक्कत वहां पे थोड़ी लगी मुझे, बट यस, बट गुड गेम फॉर ऑल द थ्री चेंजेस। हाँ, I mean, even with the bat, I think they must have had that in their mind, right? Ki batting already weak hai, and if Shokeen was a possible batting option also, even as a second could give you a few runs, they must have thought ki it's better to go with him, which was sort of evident from his batting as well. Given the situation, 25 of 25 मारे, रन बॉल मारा, but I think it was नहीं नहीं, fair. बिल्कुल अच्छा खेले, अच्छा खेले, दोनों ही अच्छा खेले, मतलब एंड तिलक वर्मा द स्टार एंड स्काई, मतलब आज भी काफी फ्लुएंट लग रहे थे, अपार्ट व्हेन एमएस धोनी मिस्ड हिज स्टंपिंग, मुझे लगा एक और 50 आने वाली है, एंड मुंबई इज जस्ट डिपेंडिंग सो मच ऑन सूर्य कुमार, मतलब देयर सो मच डिपेंडेंस ऑन हिम, क्योंकि रोहित और किशन नहीं चल पा रहे। किशन ने बहुत अच्छी स्टार्ट की थी पहले 2 गेम्स में, बट ही इज जस्ट फिजल्ड आउट। That's right. Uh, I want to talk about one more instance in the game. मैं इसको captaincy master stroke तो I'm not going to say it as a captaincy master stroke by Dhoni or anything. But in first over, Farad, I'll possibly give it to you. Do you think it was right to not bowl Mukesh his fourth over, despite वो अपने पहले 3 ओवर में 3 विकेट लेके सिर्फ 13 रन पे गए? आई थिंक ये पहली बार नहीं हुआ है शुभम, ये पहली बार नहीं हुआ है। वी सीन इट इन द लास्ट गेम एज वेल कि उसने ठीक की अच्छी बॉलिंग की थी, नॉट वेरी गुड आई वुड से, बट नॉट सो बैड आल्सो। लास्ट मैच में भी 3 ही ओवर डलवाए, एंड आई डोंट थिंक कि सीएसके इज बैकिंग हिम एज अ डेथ बॉलर। आई थिंक डेथ के लिए दे आर लुकिंग मोर टुवर्ड्स ब्रावो, या आई थिंक प्रीवियस मैच में तो जॉर्डन जो पिट गया था, बट प्रिटोरियस, एंड दे एक्चुअली कवर्ड द डेथ। सो प्रॉब्ली आई मीन, या तो इफ यू वाज बॉलिंग वेल तो 4 के 4 ओवर जैसे दीपक चहर को देते, वो शुरू में ही आप खत्म करवा देते। दैट कुड हैव बीन द स्ट्रेटजी आई थिंक। somehow I mean, CSK is not showing enough confidence on that youngster Mukesh Chaudhary. He is anyway getting a chance क्योंकि दीपक चहर नहीं है in the first place, but I think थोड़ा और बैक किया जा सकता है। मतलब आज तो नेचुरल ड्रिफ्ट था, जैसे ईशान किशन का आउट किया था आज, रोहित का तो चलो इट वाज अ लूज स्ट्रोक टुडे। So yeah, he did bowl well. He's getting better. जितना पहले पिट रहा था, अभी थोड़ा कंट्रोल है, कंट्रोल्ड डाल रहा है। So yeah, I mean, he should be backed a little more, I think. No, makes sense. Absolutely. With it, from a Mumbai Indians perspective, I mean, even winning next 7 games, which is like extremely unlikely, तब भी कोई short spot नहीं बनता for playoffs. So season is more or less over. So as a Mumbai Indians fan, what are the kind of changes or what kind of cricket do you now want to see from MI? Because now they have nothing to lose. आई ऑनेस्टली डोंट वांट अ लॉट ऑफ चेंजेस, मतलब आप देखोगे टीम में काफ़ी यंगस्टर्स हैं, मुंबई इतना चॉप एंड चेंज कर रहा है जो विच इज़ वेरी अनलाइक मुंबई, मतलब 3 चेंजेस 2 चेंजेस हर मैच में टीम बदल रही है। सो आई एक्चुअली डोंट वांट चेंजेस। अब जो चेंजेस किए हैं आज, तीनों काम किए हैं, सो आई एम होपिंग दैट नो मोर चेंजेस। उनाटकट आज की गेम के अलावा, वैसे उनाटकट टिल व्हाट ही वाज बिफोर, ही इज डूइंग वेरी वेल फॉर मुंबई कंपैरेटिवली। आज मैच जरूर हराया है, बट उनाटकट हैज बीन वन ऑफ द पॉजिटिव साइंस दिस ईयर। सो एंड विद द बैट एज वेल ही इज बीन हिटिंग। अर्जुन तेंदुलकर को खिला दो, उनकी एक वीडियो चल रही थी सोशल मीडिया में जिसमें उन्होंने ईशान किशन को बोल्ड किया था, बिल्कुल यॉर्कर डाल के। आज ईशान किशन बहुत सिमिलर बॉल पे बोल्ड हुए, बट ही कैन कम, बट देयर सो मच बैगेज। एंड स्टार्टिंग में जैसे बात हो रही थी कि बॉलर्स ने मैच हरा दिया, बल्कि आज बॉलर्स ने ही मैच में रखा है, जो हो सकता था इट वाज ऑल द बॉलर्स हु सेव्ड मुंबई टुडे। जर्सी तो पहनी हुई है, पर उतारनी ही पड़ेगी जल्दी अब। Farad, I'll ask you a question. So, although Chennai has won 2 out of the last 3 games, and I think against Gujarat also, it almost looked like कि match जीत जाएंगे, but हार गए. Do you think it could be a sign of better things to come, or do you think कि it was just like this is one of those small positives in a
otherwise bad season? देखिए सीएसके का इट हैज बीन अ बिलो एवरेज सीजन, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट दिस इज अ टीम दैट रियली नोज हाउ टू विन। आपको ये भी याद रखना चाहिए, मतलब कभी भी मतलब वो मतलब पासा पलट सकते हैं, विनिंग एज दिस इज अ हैबिट। आई थिंक कहीं ना कहीं दे आर स्टार्टिंग टू गेट द कॉम्बिनेशन राइट, ऑल्दो not they are at the middle of the season at the moment, so it can go either way, but yeah, it is a team that knows how to win, and let's hope, मतलब the struggle is going to be real considering कि मतलब it is a very open IPL, मतलब कोई भी मतलब short नहीं है इस बार Yeah. top four में, everyone is winning except Mumbai, so it it is going to be a struggle definitely, आगे के matches भी tough होंगे, but I mean you cannot ever rule out Chennai till it is over. That is right. And I mean, I'll really expect कि they win. They play their next game on Monday against a side that has not been very शुभम, बिफोर फिनिशिंग एक एक दो कमेंट है जो मैं लेना चाहूंगा। जैसे right. अश्विनी कह रहे हैं रोहित शुड बैट इन द मिडिल ऑर्डर। अश्विनी मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, नहीं बिकॉज नहीं कैप्टन है, वर्ल्ड कप आ रहा है, मतलब रोहित हैज टू ओपन। आई नो ही इज आज नहीं चले, बट वैसे इफ यू सी रोहित हैज बीन गेटिंग स्टार्ट्स, ही इज जस्ट नॉट कन्वर्टिंग देम। 25 रन मार रहे हैं, ही इज गोइंग टू अटैक, and Tim David should come, but not in place of Pollard. I don't know how to get Tim David in because आज Daniel Sams चल गए हैं। एंड फरहाद, ये क्वेश्चन आप ले लो जो अश्विनी का है, दैट व्हाट डू यू थिंक ऑफ मोइन अली एक्सक्लूजन? इट वाज सरप्राइजिंग, आई मीन दोनों में सरप्राइजिंग था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुर्गन अश्विन ड्रॉप होंगे, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग मोइन अली ड्रॉप होंगे। दीज आर फ्रेंचाइजेस जो आसानी से ड्रॉप नहीं करती प्लेयर्स को, दे गिव देम अ लॉन्ग रोप। आई थिंक मोइन अली का आई वाजंट वेरी हैप्पी, उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। मिचेल सैंटनर ने हालांकि अच्छी बॉलिंग की थी, बट आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि मतलब आपको बैट्समैन चाहिए या बॉलर चाहिए, यू हैव टू बी श्योर ऑफ दैट। इफ यू हैव टू मेनी ऑलराउंडर्स हु कैन फिल इन दैट शू ऑफ अ बॉलर, तो फिर आपको मिचेल सैंटनर की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको प्रॉपर मतलब, क्योंकि देखिए एक सिंपल सा फैक्ट है कि मोइन अली इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, सैंटनर इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। आपको किस तरफ जाना है आपको ये डिसाइड करना होगा, एंड उसकी तरफ ही मतलब आप जाओ। मतलब अभी नेक्स्ट मैच में भी अगर सैंटनर को ड्रॉप करेंगे वो भी गलत होगा, या तो आपका प्लानिंग सही अब सही नहीं था, या तो उस टाइम सही नहीं होगा। सो यू नीड टू बी क्लियर एज टू व्हाट यूर थिंकिंग, लाइकवाइज विद मुंबई इंडियंस। एंड मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा पिछले क्वेश्चन पे on Rohit Sharma ki I'm not too worried about Rohit Sharma considering even the World Cup that is coming in, क्योंकि आप अगर IPL उठा के देखेंगे तो he has not scored runs from 2016, मतलब उनका 30 का भी 2017, एवरेज। yeah. So I'm not too worried about Rohit Sharma, I'm more worried about Virat Kohli. Virat Kohli has not been scoring, and that is a big worrying factor considering that you are looking at World Cup in October. And एंड मतलब एक मैं वापस जाऊंगा वेयर आई आस्क्ड विदित कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुंबई के अगले 7 मैच से, तो मैं तो यही बोलूंगा कि मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे होगा कि यार ईशान और रोहित गेट सम गुड नॉक्स, गेट बैक इन फॉर्म, गेट सम रन देखिए, अंडर देयर ईशान बैट। किशन तो वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी नहीं है, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ ही परफॉर्म्स, ईशान किशन इज नॉट इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड। पृथ्वी शॉन से ऊपर है, बहुत लोग ऊपर आ जाएंगे, केएल राहुल है, तो मुझे नहीं लगता कि ईशान किशन के लिए वर्ल्ड कप स्क्वाड का कोई रेलेवेंस है, बट ऑब्वियसली ही नीड्स टू गेट बैक इन फॉर्म। रोहित के लिए जरूरी है थोड़ा, एंड बुमराह के लिए बहुत जरूरी है, मतलब बुमराह इज नॉट गेटिंग द विकेट्स, क्योंकि उन्होंने अभी तक 7 मैच में 3 विकेट ली हैं। आई नो बॉलिंग बहुत डिपेंडेंस उन पे हाई है, कोई और बॉलर नहीं है सपोर्ट करने को, बट बुमराह, रोहित एंड कोहली, ये तीन मतलब शॉर्ट शॉर्ट है प्लेइंग 11, एंड इवन पंत टू सम एक्सटेंट, और पंत भी नहीं चल रहे हैं सीजन, सो थोड़ा कंसर्न है सर्टनली फॉर द इंडियन वर्ल्ड कप स्क्वाड। बट यस, ईशान किशन के ऊपर काफी कमेंट्स दैट ही इज ओवररेटेड, मतलब अच्छी स्टार्ट मिली थी बट देयर इज जस्ट टू मच प्रेशर एंड ओपनर्स आर जस्ट नॉट क्लिकिंग। मुदित कह रहे कि मुझे ही खिला लो, मैं कटर्स डालूंगा। अच्छा, मतलब उनाटकट अगर 18 रन गया है तो मैं तो 28 रन जाऊंगा, मुझे लग रहा है, बट यस। अच्छा कब बोल रहा है वैसे, बट ओके। But चलिए, like that's the end. Dhoni has done it in vintage style. 28 रन मारे हैं, but as a fan, you're very happy to see him turn back the clock. 17 of the last 5 to Unatkat and sealing the game for Chennai, keeping them in the contention, which is like, in the larger scheme of things,
मैं एक And बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. जैसे वन थिंग इज बिटवीन डीके एंड धोनी, मतलब टू ग्रेट फिनिशर्स, बोथ आर आउट ऑफ द इंडियन कंटेंशन. धोनी हैज रिटायर्ड बट डीके स्टिल नॉट रिटायर्ड. तो फरहाद, आप इन दो फिनिशर्स में से करंटली, धोनी भी चल रहे हैं, आप डीके को ही बेटर मानेंगे मतलब करंटली, और वुड यू गो विद धोनी? नहीं, नो डाउट, नो डाउट, जो प्लेयर रिटायर्ड नहीं है जो रेगुलरली खेल रहा है वो मतलब ही इज अ बेटर फिनिशर एट द मोमेंट, डीके डेफिनेटली. लेकिन धोनी का क्या है कि डीएनए में है टू फिनिश द मैच. मतलब ही डजंट पैनिक. एंड आज भी देखा आपने कि इट वाज अ प्रिकेरियसली प्लेस सिचुएशन. आज मतलब आज मैच हार ही गए थे. मतलब आप 17 रन विद प्रिटोरियस एंड धोनी एट द क्रीज, एंड सामने उनटकट भी, चलो उनटकट जैसा भी बॉलर है, फिर भी यू वुड बैक उनटकट के, यू विल डिफेंड. But Dhoni being Dhoni, and it was actually not 17 of the last four, it was actually 16 of 4 at one point. करेक्ट. यस. 16 of 4, exactly. मतलब वो तो बहुत ही, मतलब आपका टेबल्स टर्न ही हो गया था. मतलब पहले बॉल पे विकेट भी गिर गई थी and then single आया. So then it was a difficult situation and he didn't lose his cool. So that means कि Dhoni still has it in him, and I think it will, let's put it this way, it will be unfair to compare DK with Dhoni currently क्योंकि But एक that has been the retired comparison all out throughout DK's नहीं कर career. सकते. अगर मतलब पूरा करियर में पकड़ू तो फिर तो धोनी हैंड्स डाउन है यार, हैंड्स डाउन. आप नहीं कंपेयर कर सकते, बट But I'll tell you करंट one करना thing. भी है. या टेल. मतलब डीके का I totally agree कि he's been really in contention and he's been very good, not taking away anything from him. But overseas now, I mean overseas, I mean like outside your subcontinent, it hasn't gone in his favor, you know. DK मतलब I know कि उनका the numbers are really small to मतलब say कि उनकी बाहर की फॉर्म अच्छी नहीं है because he's barely played any cricket in Australia or anywhere. But जितना भी खेला है, the numbers don't favor him. So I think that could also be a thing in the selector's mind कि fine, he's awesome in the subcontinent, but won't, maybe he gets wasted when you go to, you know, faster pitches in Australia, and that's where the T20 World Cup is. But yeah, I mean, irrespective of that, fantastic season he's been having until now. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. बट एक ये भी दिक्कत है कि आप खिलाओगे कहाँ पे. आई सी ओनली टू प्लेसेस दैट आर इन कंटेंशन. बाकी तो आई थिंक एवरीवन प्रीटी मच सिलेक्ट्स हिमसेल्फ इंक्लूडिंग कोहली एंड रोहित. सो आई फील दो प्लेसेस जो है, एक है केएल राहुल की एंड एक है ऋषभ पंत की. आई डोंट सी एनी अदर प्लेस एनीवेयर इन द 11 के आप डीके को फिट कर पाए. तो जो नहीं लोग करता. डीके को फिनिशर की तरह देख रहे हैं फॉर टीम इंडिया, आपको ये भी देखना होगा कि कहाँ पे फिट करेंगे, एंड विल सिलेक्टर्स बी विलिंग टू टेक दैट चांस कंसीडरिंग But के वो. Farhad, I asked you this question एक पुरानी वीडियो में, तब you said हाँ, no. Should DK be a मैं part of तो the अभी भी squad ना now? कर रहा हूँ. नो, अभी भी ना. अभी भी नो, अभी भी नो, क्योंकि Shubham, what is आई your answer in this? For, sorry again? For DK to be DK, included in the World Cup squad? see, I'm पहले totally yes या standing. no बोलिए. No, no, पहले No, yes, no, squad फिर answer. 15 के स्क्वाड में मे बी 11 में जगह नहीं बनती. But I think he's done 11 enough to be in the स्क्वाड 15-man squad. I think he should be 15 मैन included. स्क्वाड डूइंग मे बी. एवरीथिंग ही कैन. या Yeah. हाँ, मे बी. And he has the support of Kohli. मतलब Kohli captain नहीं रहे, but Kohli has been nothing short of words when it comes to praising DK. So I think he still has that pull to get DK in the team. So I'm hoping he's a part of the squad. I want to see him back. I mean, very unpopular opinion, but if I was Kohli, I would be worried for my place in the squad. या maybe Yeah, I not mean, this World Cup, but after that definitely, yeah, if he exactly. doesn't perform, if the form Huh. remains as it is right now. But with that, we come to an end. Thank you so much, Farhad. Thank you so much, Vidit. It was a fun video. We'll be back soon for more such videos, and until then, good night.